and so on and so forth. I'm sure there are more people who might join, hoping that it could be a session by Mohan Iyer. But so that's it. Uh, what do we say? I mean, for the benefit of newcomers, I can see a few newcomers. All I can say is that open house is a concept which was started at least a month ago. He said that we'll just create an open forum for all the 60 plus people and just create some kind of a free space for communication and talk on anything, any specific subject that comes to the mind of the person who is running the show. So, and we avoid specifically topics on religious stuff as well as political stuff. So that this is a very clean kind of an environment where we don't want to get into any kind of controversies. But we encourage people to come forward, talk, share their thoughts. So this is the whole idea of this open house, because we have seen that many people have a lot of ideas, a lot of thoughts. They avoid or they feel a little shy coming out in the open to speak to people or share their thoughts or views. So we thought that here we are all similar set of people. We are all 60 plus, fairly experienced. We have seen the world. So there is no harm in sharing some of the ideas and thoughts that we might have on a given subject for that particular day. So that is how we started, and it is going on for over a month now. And it's mainly thanks to seniors today. This initiative has come out from them, and there are a lot of things that keeps happening on this forum. Like every Saturday, there is a doctor who talks on some specific topics and subjects, specifically targeted at the senior citizens. What could be the problem that you may face and how that can be countered? So, some of the really useful sessions we have, Gyan sessions are there, storytelling sessions are there, musical session. Come August 17th, we have the 8th season of Seniors Have Talent musical competition. So that is another beautiful thing that will go on for the next eight weeks after that, where there will be 6 rounds, and from each round there will be 4 people who will be picked up, and almost about 12 to 16 people participate every week. So 4 will be chosen, 2 popular votes, and 2 will be by the merit. That is a judge's choice, or the choice is by the panel of people who actually run the show. So 4 such people from every group will come together. At the end of it, after 6 rounds, there will be 24 people vying for a trophy. And the good thing is, out of 24, at least 10 to 12 people win the trophy. So probability of winning is very high once you qualify. So it's a really enjoyable exercise. We have all gone through. I was part of the first season. I recall Sita also was there in one of the seasons, the recent past. So it's an enjoyable thing, and initiative completely done by the seniors today. So they really have their minds for the seniors as to how we can make life better for the seniors. So this is one such exercise where we come together to discuss anything. So now, what is the topic for the day? That could be probably the thought process. Now, I was just before coming into this session, I said, what would I talk? Because it's not something which I planned too long, too much, and all. It is just that I want people to express about whatever is the broad guideline that is given as a topic. Happiness, sadness, sukh, dukh. These are all very common things, or 2 sides of the same coin. So happiness can be ecstatic, sadness can be really something which is a sorrowful thing, that experience that you would have had. So today I would like us to share with each other the ecstatic, the most happiest moment of their lives, and probably the very sad moment, which of course I will exclude some of the known sad events, like death of a very close person, a family member.
this could be really saddening. So that is given. Now, but over and above that, any other moment of real pure happiness you never expected and it happened, or you knew that it was going to happen, and when it happens, the kind of feeling. What is that event? And likewise, what is it the saddest moment that you encountered? Now, is any of you willing to talk about it right away, or you want me to probably express my happiness and sad moments so that you get an idea as to what is the whole thing about? What is the thought process? Anyone would like to initiate it, set the ball rolling? Ram Madanji, you have any views? Hello, Yeah, good evening to you. I am Ramadan from Punjab. Okay. At present in Noida with my son. Wow. I am only 75 years old. Wonderful. So I actually joined this meeting for the music, Okay. songs. I sing on Star Maker, Oh, lovely. and I have shared one song as was desired here. Okay. So I don't know what is going to happen further about this topic. Okay, so that is a different league, and something which we are talking about is a musical competition. You probably, Yes. yeah, that will start on the 17th of August. Okay. So, Right. Ram Madanji, you sing happy songs or sad songs, or which one do you enjoy? All. You enjoy all. No problem for sad or happiness. Okay. Everything is just normal. Wonderful. Sad things and happy moments, these are now quite normal on this stage of life, especially. So, anything that impacted you that you would like to share with us? Any happy moment and any sad moment? I actually take everything normally. Yeah. So I am very happy with children, but I don't like to be sad. Although I will definitely prefer to share the grief of my friends, whatever I can do for that. But actually, I think that I have already spent the general, the average age of an Indian, and now that I am living at the age of 75, it is the just bonus given by the God that I will like to enjoy. Yeah, definitely. That's what I think it makes a lot of sense as you say that it's all bonus years that we are going. Yes, definitely. But then, as a very experienced person, you may be able to share some of those happy moments with us. The happiest moment. Let's not say that, okay, oh, when my son was born I was the happiest, or whatever, but I'm looking at something different where you didn't expect, but it happened. Actually, I remained sometime worried about my grandson, who is now 22. Wow. He was not finding actually some space of his choice in India in his studies. So myself and my son thought of sending him to Canada. And we never expected that he will even clear the वो जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, Okay. आईलेट वगैरह जो होती है. IELTS. तो hello. Yeah, go ahead, sir. Okay, your picture is not coming here now.
I can see you. I mean, Oh, acha, okay. we, So we were worried about him. And in India, actually, you may agree or not, uh, here law and order problem is the main problem. And that is because of the uh, population of India, I think. Things are not going to be so smooth for the coming generation. Mhm. स्पेशली जो पुअर बच्चे हैं पुअर सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के दे दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड themselves in a righteous position say here in India. So I may be wrong, but uh, I and my son had been thinking like this for a long time. So I decided to send my grandson to Canada, but we never expected that he will even clear the वो जो टेस्ट होते हैं इंग्लिश आईलेट we never expected, but thanks God we are very happy. I was very much happy the moment he got the good grade and good institute in Vancouver, and he was admitted there. And recently, last week, he got the degree from his university there. So that was the just some happy moment for me. Fantastic. That was really, really nice. So he's on his own there, Ram? Yes, he's there. Wow, superb. Thank you. So incidentally, we have Sita Jairam, who is also from Canada. Okay, very good. He is in Vancouver, but I'm not sure whether in Toronto, right? Yes, I'm in Toronto, Ontario, which is towards the east, while Vancouver is more towards the west. Yeah. Vancouver is too far from Toronto. It is the other end of Canada, actually, western end of Canada, I would say. Yes. We are on the eastern, yeah. Okay, right. So that's a real happy situation for you, Ramji. बहुत अच्छा लगा सुन के आपको Thank you very much. आप Thank you. समा रहे हैं इस बात पे कि grandson has now moved on to Canada and doing well. All the Yes. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, and Thank you. we hope that he does well and then comes out with flying colors in whatever he embarks into. Our best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, so now, is there some unpleasant thing that you would like to share? ऐसा कुछ घटना जो Unpleasant. I am the only brother in my family, Okay. and I had 5 sisters. Okay. And my mother expired when I was a student of 10th class. Okay. My father too expired about 55 years ago. Oh. So I had to marry my sister also, and now 3 of my sisters have expired. All were younger to me. Oh. So I have 2 sisters now, married, and they are well settled. Okay. And I have one son. He's in Noida, where I am here with him. So, and I have got 2 daughters. One is in Delhi, and the other is in Vancouver already. Okay. No, I actually, sorry, Ramji, I just specifically said that the sad moments should not be the deaths, So we can speak about any other sad moment because anyone who is close to you who goes, we know that it is one of the saddest moments. But I'm saying outside of that. Sad moment, I had to, because my parents had expired when I was
not so big in age. So Uh-huh. there was engagement of my sister, and I was working an officer in the food and supplies department in Okay. Punjab. तो वहां पर वो पैडी और वीट की ऑक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मंडियों में जो ऑक्शन होती है वीट एंड पैडी की। Uh-huh. तो सिस्टर की मेरी एंगेजमेंट हुई थी और मैंने उसकी शादी के कार्ड बांट रखे थे। अच्छा। तो जब मेरे पास एक मैसेंजर आया मंडी के अंदर, where I was doing my duty, and he told me कि वो लड़का जिसके साथ आपने एंगेजमेंट की थी सिस्टर की, वो घर से भाग गया है Hey. और लिख कर गया है घर पर कि अब मैं वापस नहीं। Oh, okay. So that was the saddest moment of Understand. my life. Correct. Which you at least expected and it happened. And to overcome that itself is a challenge. But I'm sure you have seen how the world is and then you know better. So thank you so much Thank you very much. for sharing. Very nice meeting. I am very happy to meet. Pleasure is all ours. Thank you so much. Okay, ji. Okay. Tarun ji, you have anything to say? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। No, we can't hear you. You have to unmute yourself. ओके नहीं Thank you जी। मैं ओके हाँ आवाज आ गई, आवाज बराबर आती। बिल्कुल आ गई। ओके ओके मैं गुजरात से हूँ ओरिजिनली, अभी हैदराबाद में 15 साल से रहता हूँ और यहाँ को 2 व्हीलर मशीन पार्ट का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। ओह अच्छा। और मैंने सारी जिंदगी गवर्नमेंट सर्विस की है। मैं रिटायर हुआ, डेप्यूटी रजिस्ट्रार था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में गुजरात स्टेट में। वहां से रिटायर होकर यहाँ आया और बिजनेस जानता नहीं था, बिजनेस क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं था। इसलिए ऐसे माहौल ऐसा हुआ, सब दोस्त मिल गए, तो मैं अभी सोशल वर्क में आ गया हूँ और पॉलिटिकल नहीं, खाली सोशल। मैं मोदी विचार मंच के मैं सहमत हूँ, मोदी विचार में मानता हूँ और उनके सभी विचारों से सहमत हूँ, मगर मैं बीजेपी टीआरएस ऐसे कोई पॉलिटिकल लेवल में मैं किसी को मानता नहीं हूँ, कोई पार्टी में मानता नहीं हूँ। जनरली मैं यहाँ के लव फॉर काउ फाउंडेशन है उनका ट्रस्टी हूँ। जो मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं श्री गुजराती ब्रह्म समाज है उनमें से यहाँ आके मैंने हमारी सेवा शुरू की थी। तो मैं अभी 4-6 साल से प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मैं दक्षिण भारत के 5 स्टेट है उनका हमने श्री गुजराती ब्रह्म समाज का एक बनाया है, समाज का एक संकुल बनाया है श्री दक्षिण भारत गुजराती ब्रह्म समाज। इसमें मैं 6 साल से सेक्रेटरी भी हूँ। हाँ, और यहाँ गुजराती समाज है यहाँ का, ये ऑल गुजराती। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म समाज नहीं, ऑल गुजराती और सब गुजराती का। यहाँ हैदराबाद में भी एक गुजराती समाज है, सिकंदराबाद में भी गुजराती समाज है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ और सिकंदराबाद गुजराती समाज में 5 साल पहले इलेक्शन में खड़ा था, तो मैं वहां से बहुमत से आ गया। मेरी सेवा को ध्यान में लेते हुए सभी ने मुझे चुना और कमेटी में आने के बाद हमारे प्रेसिडेंट घनश्याम पटेल ने मुझे नवरात्रि चेयरमैन बनाया। तो बहुत धूमधाम से नवरात्रि करते हैं। कोरोना काल
जब से आया तो दो साल बंद रही। पहले साल बहुत अच्छी की। अभी ये साल हम करेंगे। अभी ये संडे को इलेक्शन था, तो मैं निर्विवाद चुना गया नवरात्रि चेयरमैन वाह। 3 साल के लिए। 3 साल के लिए अभी ये लास्ट संडे। और यहाँ हैदराबाद में भी गुजराती समाज, सिकंदराबाद में भी है। हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी है। अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर एरिया में है ये हैदराबाद सिकंदराबाद। आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अखिल भारत हिंदू महासभा है। इसमें से मैं 27 दिसंबर को मैं तेलंगाना स्टेट का एडवाइजर चुना गया हूँ। वाह। सिलेक्ट किया गया हूँ। अच्छा। और योगी जी की एक राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति है, इसमें भी मैं नगर अध्यक्ष हूँ। आपने हैदराबाद ही गुजरात छोड़ के हैदराबाद कैसे चले गए आप? नहीं बेटा बहुत बहुत लंबी कहानी है, बस शॉर्ट में कह दूं तो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था विप्रो नाम की कोई कंपनी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाँ, तो वो उसने अहमदाबाद में था, तो मैं तब सर्विस करता था। तो हम बहुत वहाँ हमने सोचा कि हम भी अहमदाबाद सेट होंगे, ऐसा होगा। तो बेटे का मामू जान, आप समझते मामा। हाँ, तो मामा को ये बिजनेस था। उसने बोला कि नहीं, ये तो टैलेंट वाला लड़का है, इस पे ये खाली सर्विस करता है, ये बिजनेस करे, ऐसा करके बोले हैदराबाद में एजेंसियां देनी है, तो तू हैदराबाद संभाल। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं सर्विस करता था, बेटा भी सर्विस करे, ऐसा सोचता था। और ऐसी सोच होती है जनरली, सर्विसमैन का बेटा सर्विसमैन, ऐसा। तो बेटे ने मुझे बोला, एक ही बेटा है, एक बेटी है गुजरात में अभी। अच्छा। वो भी वो बेटे ने बोला कि पापा जी, मैं जो जा रहा हूँ हैदराबाद, तो वो कंप्यूटर का बड़ा हब है वहाँ पे। मैं ये बिजनेस करूंगा। अगर बिजनेस मुझे नहीं अच्छा लगा, अगर बिजनेस में नहीं मैं सेट हुआ, तो कंप्यूटर में है, आपको मेरी कमाई तो नहीं चाहिए। अभी तो आप सर्विस कर रहे हैं और आप रिटायर होने वाले, आप पहले से बोलते हैं मैं मेरे आत्मनिर्भर रहूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो आपको मुझे जाने दो, ट्राई करने दो। मैंने बोला कि मैं तो ना बोलता हूँ। तो उनकी माँ ने बोला कि ना ना बेटा, तुम जाओ जाओ, मैं बोलती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ो। तो हम तो क्या बोलते, नहीं जाने देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हाँ। पैसा तो मैंने 50,000 खाली दिया, ओनली 50,000 रुपीज 2001 में। और इनकी माँ ने हमारे से छुपे हुए 50,000 दिए। और उनके पास कुछ उनकी कमाई के पैसे थे। उसने यहाँ बिजनेस चालू किया। स्टार्टिंग में तकलीफ हुई होगी। मैं थोड़ा अभी तो नहीं बोल सकता, हमारे यहाँ ग्रुप में भी कई होंगे, मैं थोड़ा हिंदुत्ववादी हूँ, इसलिए ये सब सिकंदराबाद, हैदराबाद, ऐसा नाम सुन के मेरे मन में बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मैं भी नहीं आया। मैं उसका उद्घाटन हुआ तो मैं नहीं आया, इनकी माँ आई। फिर धीरे 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 सब इनका कारोबार बढ़ता गया। एक दिन आया, आके बोला, पिताजी एक बार तो हैदराबाद आओ। इनकी माँ बहुत कहती थी हैदराबाद बहुत मजा आता है, हैदराबाद ऐसा है, हैदराबाद। तो मैंने भी सोचा कभी देख तो आओ बेटे का कैसा है कैसा नहीं। मैं यहाँ आया 10 दिन की छुट्टी लेके। ओके। फिर हैदराबाद में रोज मेरा बेटा सुबह में मुझे बोलता था, पापा जी ये रूट है, यहाँ पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, शाम को वापस घर आ जाओ, ऐसा करता था। तो 10 दिन में तो मैं और मेरी वाइफ थोड़ा बहुत घूमे, मुझे मजा आई। तो 10वें दिन मेरे बेटे ने बोला कि आपकी टिकट कैंसिल करवा दूं, ऐसा बोला। मैंने बोला कि अभी करवा दे। फिर मैं तीन महीने तक यहाँ से गया नहीं। ऐसा हैदराबाद मुझे पसंद आया। यहाँ सब गुजराती को सब मिला। यहाँ 2 लाख गुजराती हैदराबाद में है, 2 लाख गुजराती सिकंदराबाद में है। और मोस्टली सभी गुजराती के बच्चे बहुत पढ़े हैं और सभी गुजराती यहाँ बिजनेस करते हैं। ओके।
इनके इसलिए मैं यहाँ धीरे धीरे ऐसा करने लगा। फिर हर साल छुट्टी लेके आने लगा। फिर मैं एक साल बाकी था सर्विस में, और बेटे के वहाँ बेटा हुआ, तो इनको यहाँ छोड़ दे आई इनकी माँ। मैं भी उनके साथ में आया, और 2-3 महीने के बाद इनकी सासू आने वाली थी यहाँ पे। तो मेरी मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि मैं यहाँ से हैदराबाद से नहीं आऊंगी गुजरात, मैं ये लड़के को बड़ा करूंगी, और इनसे मुझे लगाव हो गया है। आपको रिटायर होने जाना है तो जाओ, यहाँ से कुछ भिजवा दो, रिजर्वेशन तो भी भिजवा दो, मैं आने वाली नहीं हूँ। ऐसे बोला। अच्छा, तो फिर क्या करे? फिर मैं वहां गया, फिर रजा लेके आया, छुट्टी लेके आया, ऐसा करते 1 साल के गुजार दिया। फिर रिटायर होके यहाँ आ गया। ऐसे सेट हुआ। यहाँ कुछ दुकान पे जी नहीं लगता था, क्योंकि मैंने व्यापार नहीं किया। सारी जिंदगी मैंने सर्विस ही की है। तो फिर यहाँ आके मैंने ये सोशल वर्क में धीरे 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 चालू कर दिया है, और ये कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ अभी, और समाज सेवा करता हूँ, बस। यहाँ पे और कुछ नहीं। नहीं, आपको इसी में खुशी मिलती है एकदम। यू व्हाट इज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट? क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट इट, आपका मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड नॉट सो हैप्पीएस्ट बात कर रहे हैं। हाँ, मैं हाँ, 5 साल पहले, यानी कि 17 में मेरी वाइफ डायबिटीज था, और एक्सपायर्ड हो गई। हार्ट अटैक की वजह से, एक्सपायर्ड हो गई। और मुझे बहुत शौक लगा, मैं डिप्रेशन में बहुत आ गया। और हमारे लव फॉर काउ फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी है वो जसपत पटेल, वो हमारे वहाँ आए, और मुझे बोले कि तरुण भाई चलो गौशाला चलो। और गौशाला मुझे ले गए पहली बार। एक महीने के बाद मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था, ऐसा डिप्रेशन में आ गया था। और जनरली दरेक को होता है। तो फिर क्या हुआ कि गौशाला जाके उसने बोला कि ये गाय है, गाय की पूजा करो और गाय की सेवा करो। बाइक को छोड़ो, बाइक तो चली गई, हमें सबको छोड़ के उनको हम भूल नहीं सकते, मगर ये गाय में जी लगाओ। फिर से मैंने गाय में जीव लगाया। मैं हर महीने संडे टू संडे गौशाला नाम का एक सूत्र बनाया है हमारे लव फॉर काउ फाउंडेशन वाले। यहाँ आप हैदराबाद सिकंदराबाद के किसी को भी पूछेंगे कि लव फॉर काउ वाले हमसे ऐसा ही पहचानते हैं। और सभी मुझे यह गौ सेवक के नाम से ही मुझे जानते हैं सब। अच्छा। और हाँ, और हमने हमारा लव फॉर काउ फाउंडेशन है, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं रखा है। हम प्रचार करते हैं, आप डेली आपके घर में हुंडी रखो, और हुंडी में 1 रुपया डेली डाल के घर के बाहर जाओ। कोई भी आपके बच्चे को भी, क्योंकि गाय अभी तो आप तो जानते हैं कि आपको गाय गूगल में आपके बच्चे को ढूंढने पड़ेगी, गाय क्या है तो गूगल में ढूंढो गाय क्या है। इसलिए गाय का प्रचार करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। अनेक सरकारी संस्थाओं में भी जाके हम गाय का प्रचार करते हैं, स्कूल में जाके करते हैं, कॉलेज में जाके करते हैं। और BAPS स्वामीनारायण संस्था है, आपको नाम सुना होगा। स्वामीनारायण संस्था बड़ी संस्था है, इसमें भी मैं व्यसन मुक्ति झुंबेश का प्रचारक हूँ, वो भी प्रचार करता हूँ व्यसन मुक्ति के लिए। ऐसा है बराबर। अभी मुझे माफ कीजिए, मेरे सब दोस्त यहाँ आए हैं और यहाँ बैठने के लिए, कि मैं अभी मैं छोड़ता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत मजे, अच्छा बयान किया, थैंक यू वेरी मच। ओके, मजा आई। और ऐसे मिलते रहेंगे, अपने विचार की आपने करते रहेंगे हम सभी, बराबर। और राम मदन जी, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर सल्ला जी, आपको मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और लक्ष्मीनारायण जी, आपको मिलके भी बहुत बहुत खुशी हुई। मोहन किशन जी, किरण ओबेरॉय, प्रकाश सिंह, सबको मिलके बहुत, सुधा जी,
भाई मंजीत भाई बंसल, सीता जी, सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अभी क्विट कर रहा हूँ। बाय बाय। Thank you for this. जय Thank गौ you. माता, जय गौ माता। Okay, thank you so much. Manjeet जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yeah, good evening, everyone. I have been into the pharmaceutical company for almost about 40 years. Oh, wow. I worked in about 24 states in the country, and 4 years I was in Kathmandu. हाँ 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 हाँ. So, you see, my happiest moments have been, you see, I had two dreams in my life. Okay. One was to build a beautiful house for me and my wife, which I have done in Chandigarh. So Super. that is one. I take quite a lot of pride in making that house. Number one. Excellent. Number two, the second dream is to go on a world tour, which is what I'm planning maybe next year. Oh, So wow. both the dreams which myself and my wife had in mind, so we are trying to fulfill that. I have two daughters. Wow. One works for Accenture, and the other is a journalist. Both of them are married, Acha. and I run an Airbnb on my first floor in Chandigarh. So my wife is quite busy in running that BNB. So that's the happiest moment. So my dreams are coming true. What I thought initially when I was young, that I will build up a house, then I will go on a world tour, is what I've dreamt all these years in my life. Okay. So one of that is already fulfilled. All of you are most welcome. Come and visit Chandigarh. Stay with me, enjoy the weather, and enjoy the food in Punjab. Oh, So why this not? is one. So the sad moment was I was once posted to Kathmandu for 2 years. Okay. There was a job on hand, and the vice president of the organization told me that this is what you're supposed to do in 2 years' time. Just to tell you that the job was finished in about 1.5 years' time. Uh-huh. And when I told them that I want to go back to India, they said that we don't have any replacement for you. The Oh. kind, so the kind of work which you have done, I don't think we'll get a replacement. So I was put there for almost about 4 years. Uh-huh. So Okay. although I was managing a country, but then I lost a lot of things of not being in India. I retired as a senior business manager, but I would have retired as a director if I would have stayed back in India, because Nepal operations were very small, Uh-huh. although challenging. But I had to keep my daughter in India for studies because there was no big college in Kathmandu. That's true. So that's one period which was lull in my life, and I was thinking that why did I take a transfer to Kathmandu? But on the other hand, there was a lot of learnings which I had, because nobody in India would have had that experience of managing a country like Nepal, and with all operations of HR, administration, Okay. and sales and marketing, and everything was in my control. So these are two parts of my life which I've shared with you. Thank you so much. Excellent. Kathmandu, Biratnagar, all those areas Yeah, covered. I used to work all these places. Pashupatinath also you must have had. Yes, many times. Okay. Because there were people who used to come and from India, and every time you have to become a coach or a guide for all those places. Yeah. But my Kathmandu stint was very good for 4 years. Yeah. Although I was to come back after 2 years, but then this is what the destiny had in my career. There was some happiness also. Yeah, there was some hidden happiness also. But then you see, once you're promised that you'll be taken back after 2 years, Yeah. and if you're not done, if the organization does not fulfill that promise, you always feel bad. That was a little one time which I had, I mean, very bad period of my life, because there were Maoist this thing in Nepal, and there was a blast in my daughter's school. They were quite Many times close. Yeah. organization calls happen, and then I think. I understand. And in corporate world, most of if you have been into the corporate world, you know how it works. Yeah, very much. Yeah. So thank you so much. Most welcome, sir. Most welcome. Yeah. Hope you are enjoying yourself now in your retired life with your. Yeah. And I am also on Star Maker, Oh yeah, we would like. and I have a virtual room of mine. अच्छा एक दो लाइन हो जाए कोई भी गाने का. आने से उसके
आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जीने की राह फिल्म के गाना है। यस, जीने की राह, जितेंद्र जितेंद्र, तनुजा, तनुजा, यस। कदम, released on 25th April 1969. My wife is a Hindi teacher, and she is doing online classes these days. She teaches 10th, 11th, 12th. Excellent, excellent. She has been into the teaching, and she is now editing books for CBSEs these days. Yeah, yeah. Okay, great. Thank you. Absolutely pleasure to meet all of you. Thank you. Thank you so much. Yeah, welcome. Mohan Krishnan has joined sometime back, and he is not keeping too well, and Yes, I saw him. we all hope that he gets back to feet normal very quickly. Yeah. Sorry, Mohan ji, आपके लिए you can yeah, He just says be thank there, you. moral support. Thank you in chat. Yeah, right. Take care. Okay, Sita ji, would you like to share some of your happiest and saddest moments? Mm, I mean, that significant happy or sad moments are not there. I would say the happiest moment was when I was a little apprehensive about joining seniors today, and then to participate in the events as such. But then happiest moment was when I got the trophy, which I didn't. I saw talents all over while I was watching everybody's videos. I said, okay, people are really singing well at that age. Why are you So I don't. not video, Sita? Sorry. Oh, sorry. I'm on my way to work. Yeah, Fine, yeah. I can. That's it. Yeah. Yes. So I'm taking it in my car actually. So Okay. yeah, the happiest moment was when I got to listen to people and realized what a commendable work seniors have talent is doing. So Wow. yes, otherwise nothing much as a sad moment because I have everything that I want or more than what I deserve. So I don't have sad moments at all that I can think of. And even if I did call it sad moment, now after years when I realized that was very silly to think that was a sad moment. Like you said, yes, the death of a person, losing a person can be very painful. But I think in course of time, we are mature enough to accept that it's a part of life. So I don't have any sad moments as such. Come to think of it today. That's very nice. That's very good situation to be in, that you don't have any sadness. It's a great way of accepting life. You know, even if there are some, you don't feel it is okay. This happens. It's actually you begin to feel that everybody goes through this. It's not only me. So I think yes, that's not a sad moment. Yes, it's a part of life. Tomorrow my children may feel sad about me. Yes, it's a cycle. That's it. No, that is the reason I was very clear right in the beginning, saying that let us not talk about expiry or deaths, because that will be a sad moment. Anything Right. that. Yeah. I mean, here, before I go to any other person, I would like to share that my saddest moment. Maybe it will be a matter of laughter for you, or it may sound funny. But my saddest moment, I can point out there are just two of them, and both are related to the cricket matches that we lost to Pakistan. So on 18th of April 1986, when Javed Mehrdad hit his six, when they needed 4 runs to win, of the last ball of Chetan Sharma, it was just an evening that I can't forget ever. It was such a sad moment for me because I am a fanatic of cricket, so I really felt hurt that India lost to Pakistan. Another one was in 2007, so not 2000, no, it is 1999 February, January 31st and 1st February, when we lost to Pakistan in Chennai. And chasing 271 to win, at one point we were 82 for 5, and then Sachin Tendulkar and Nayan Mongia took the score from 82 for 5 to 217, and we were very close to winning.
And at 217, Mongia got out. Then Sunil Joshi joined Tendulkar, and the score went up to 254. Now you had only 17 runs to make. And at 254, due to back spasm, Tendulkar got out, and seventh wicket gone. Then three more wickets, and now Wasim Akram had tasted blood, and they ensured that the rest of the people, like Sunil Joshi included, Kumble and others, Srinath, they could not score the required runs, and they added four more runs, and we lost the match by 12 runs actually. So that was a very sad moment. I walked 100 minutes after this particular event that happened. I was so upset. I was new to Bangalore, and just like a crazy fellow, I just went around walking. Then I happened to meet Nayan Mongia in a get together, private get together. I asked him why did he play the shot that he did. Of course, he gave a very logical answer. And 1 week later, we were again on cloud nine because we defeated Pakistan, and when Kumble took 10 wickets in Firozshah Kotla. So, I don't know how many of you are interested in cricket, but I don't want to elaborate my discussion with Nayan Mongia. But Mongia gave me a very good reason. I was convinced about the fact that, why he did what he did. And we ended up on the losing side by a very wafer thin margin. So, very upsetting moment. And my happiest moment is when I became a father-in-law at the age of 48, and when my daughter got married, I lifted my 84-year-old dad. There was ecstasy for me. So I just thought I will share from my side. Now I will get back to Dr. Sarlaji. You have anything to share with us about your ecstatic feeling as well as sad moment? आप जरा unmute कीजिए, kindly unmute yourself. Unmute, we can't hear you. हाँ जी हाँ, अब सभी को नमस्कार सुनाई देता है साहब? बिल्कुल देता है, बिल्कुल. आप सभी को? हाँ जी. अच्छा, हाँ जी हाँ, मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ, और मेरे टाउन का नाम है कोडीनार. कभी आपने सुना भी नहीं होगा शायद. और वेरी नियर टू सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अबाउट 40 किलोमीटर फार अवे. और यहाँ का जो प्राकृतिक यहाँ की जो संपदा है उससे कोडीनार फेमस है. पहले ये शुगर मिल के हिसाब से फेमस था, और बाद में अंबुजा सीमेंट यहाँ पर आई है. और अभी शाहपुर जी पालनगी का एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ पर शुरू हो रहा है. तो अभी इंडस्ट्रियल विकास हुआ है. और मैंने गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद जामनगर कॉलेज से BAMS विथ कंपैरेटिव मॉडर्न मेडिसिन स्टडीज से किया है. और पहले मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, MBBS है, मैं BAMS हूँ. और हमने पहले यहाँ पर हमारा कोडीनार में सबसे पहले प्राइवेट मैटरनिटी होम शुरू किया था. और अब बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो और थोड़ा काम कम कर दिया है, तो अब सिर्फ कंसल्टेशन करती हूँ मैं. और डॉक्टर साहब GP करते हैं, जनरल प्रैक्टिस, और वो अपने क्लिनिक पर है. और मेरा क्लिनिक मेरे घर के अंदर ही है, पहले से जो था उसमें बनाया हुआ था. तो मेरा टाइम 6 बजे पूरा होता है, लेकिन मुझे बहुत इच्छा थी. और आपने जो बोला हैप्पीएस्ट मोमेंट और सैड मोमेंट, तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट पहले बताऊं या सैड मोमेंट बताऊं? क्या है कि मैं स्टडी में ब्राइट थी, और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स और संगीत, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं. और अब तो संगीत ही मेरी जीवन संजीवनी है. और ये बिल्कुल हमारा शहर है, वो एकदम इंटीरियर में है, और हम राजपूत कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो हमारी कास्ट में वैसे भी एक गाना या कुछ आर्ट और इस एरिया में उसका कोई स्थान नहीं था. और मेरी एंगेजमेंट हो गई थी सेकंड ईयर में. और उसके बाद ये बिल्कुल गुजरात नवनिर्माण का आंदोलन हुआ, तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था. मेरी पढ़ाई बाकी थी, और पिताजी ने जल्दी से मेरी शादी कर ली. वो मेरे लिए बहुत सैडेस्ट मोमेंट था. और मेरा स्टडी ड्रॉप हो गया. और 1 ईयर के बाद हम जब फिर से जामनगर दोनों गए,
तो मेरे प्रोफेसर से मिलने गए सब आदरणीय गुरुजनों ने मेरे हस्बैंड को बहुत पुश किया कि आपने हमारी इतनी टैलेंटेड तेजस्विनी स्टूडेंट्स को उसका अभ्यास क्यों छुड़वा दिया। तो उन्होंने बोला मैंने तो नहीं छुड़वाया है, हमने तो शादी का पूछा, मेरा पास हो गया और मैंने सर्विस ज्वाइन की। तो पिताजी ने हाँ बोल दी और मेरा तो उस सवाल ही नहीं था कि कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने फोर्स किया कि आप फिर से उनकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आज कल ही उनकी फीस भर दीजिए और हम उनका बीच बीच में एब्सेंस भी चलवा लेंगे, तो आप प्लीज उनको ज्वाइन करवा दीजिए। तो मेरे जीवन साथी मान गए और फिर से मेरा स्टडी शुरू हो गया। ये मेरा सबसे खुशी का जीवन का सबसे खुशी का दिन था जब फिर से मेरा स्टडी चालू हो गया और मैं वैसे ही पढ़ाई पूरी की और उसके पढ़ाई करते करते ही मेरे इंटर्नशिप में मेरी ईश्वर तो मेरी ग्रैंडमा मेरे साथ रहे, उसको संभाल के मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई। Oh, excellent. So both were very close by happiness and sadness. दोनों आया एक ही इसमें. Very nice. Okay, आपका I think internet issue है. Looks like सरला जी. We are unable to. आप still हो चुके हैं इसमें. Nevertheless, thank you very much for this. So let's continue. Kiran Oberoi ji, can you kindly unmute yourself? We can't hear you. Yeah. Yeah, yes, sir. Very good evening to you. मेरी लाइफ तो एक पूरी स्टोरी है. My life is a big story. I love that. Yeah. I belong to मतलब पाकिस्तान से मेरे पेरेंट्स आए और फिर फर्स्ट शिमला और देन दिल्ली में सेटल हुए. तो दिल्ली में स्टडी की मैंने. आई वॉज इन ग्रेजुएशन, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो माई बुआ एंड माई हस्बैंड बुआ कुछ रिलेशन था. दे वर इन पूना एंड वी वर इन दिल्ली. तो वो दे मेट तो बोले कि क्यों नहीं किरण की शादी मेरे भतीजे के साथ कर देते. तो सिंस माई फादर आई वॉज जस्ट 18 years एंड वी हैव 3 more sisters. मेरे डैडी ने कहा ठीक है चलो, रिश्तेदारों में रिश्ता हो रहा है तो कर देना चाहिए. विदाउट कमिंग टू पूना, सीइंग व्हाट द बॉय इज एंड व्हाट द फैमिली इज, ही कमिटेड माय दिस एंड इन आई वाज 19 years, फाइनल बीए में मेरी शादी हो गई. Okay. When I came to Pune, directly I came to Pune. They were in Pune, my in-laws. Their shock of my life कि वो उनकी शादी इसलिए कर दी थी कि वो बिगड़े हुए नवाब थे, शादी करके सीधा हो जाए. Okay. एंड आई वाज सो यंग कि मैंने कॉलेज में मैंने कोई जिंदगी में स्ट्रगल क्या चीज होती है देखा नहीं, बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट वन एंड वेरी पैम्पर्ड वन. तो देन वहां से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई. आई फॉट विद द लाइफ. even my mother-in-law was very harsh and commanding lady. तो मैंने उनको देख देख के पहले तो किचन में कैसे काम करते हैं वो सीखना शुरू किया. उसके बाद एक 1.5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ और फिर उसके बाद मैंने बस पूछिए मत. और उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने कहा नहीं, आई हैव टू हैंडल. मैंने उनको कॉन्वेंट में पढ़ाना है और मैंने वो करना है जो मेरे हस्बैंड नहीं कर पाए. तो मैंने दोनों बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया है अपने दम पे. साड़ियों को फॉल लगा के स्वेटर बुन के पहले शुरू की लाइफ. उसके बाद मैंने ये जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मैं ग्रेजुएट थी, तो मैं रूबी हॉल इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन पुणे. वहां से कुछ जान पहचान के थ्रू मेरे को जॉब मिल गई एज ए पब्लिक रिलेशन द पीपल. वो जॉब मेरी जिंदगी का बूम था.
वो जॉब मैंने ऐसे की कि आई एंजॉयड माय, आई वाज ऑल द टाइम वर्किंग। सुबह उठ के मैं सब बच्चों को ब्रेकफास्ट करके स्कूल भेज के और सब्जियां बना के हॉस्पिटल चली जाती थी। शाम को घर आते ही दोनों को पढ़ने को बिठाती थी और मैं किचन में चली जाती थी। तो ऐसे मैंने कोप किया अपनी जिंदगी से। एंड वहाँ हॉस्पिटल में मैंने ऐसा मैं अपने मुंह से नहीं बोलती, ऐसा माहौल बनाया कि ऑल द हॉस्पिटल पीपल स्टिल, इफ आई गो देयर, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी, डॉक्टर्स आर स्टिल रिस्पेक्ट मी, दे कॉल मी। और क्योंकि मैं, अगर कोई गरीब पेशेंट आ जाता था तो मैं वहाँ रूबी हॉल में गवर्नमेंट पे लोगों को भी देते हैं जिनके पास दवाई के भी लिए कई बार गांव से जो लोग आते थे उनको ये भी नहीं पता था ब्लड टेस्ट क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक्सरे किधर। तो आई यूज टू हेल्प देम। और उसके बाद मैं सब डॉक्टर से 10-10 रुपए लेके उनको दवाई भी दिलवा देती थी। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, तो मैंने ऐसे अपनी हॉस्पिटल की जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ दिया। और ये किया, बिग हॉस्पिटल्स आर, you have a knee pain and they will tell you to do the color Doppler. मतलब ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, वहाँ अब तो, तब तो थोड़ा बहुत, अब तो हद से ज्यादा धांधली है। अब तो वो पेशेंट को उनको कहते हैं कि भाई इतने पेशेंट लाओगे तो तुम हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, नहीं तो तुम्हारे को जॉब वो कर दिए जाएंगे। अभी तो बड़ा ट्रैक हो गया। अनफॉर्चुनेट है। हाँ, उसके बाद बच्चे बड़े हुए, पर मैंने सोच लिया कि मैं इनको इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि दे विल लीड देयर लाइफ बाय देमसेल्फ। मैंने हर काम के लिए उनको भेजा। छुट्टियों में उनको मैंने बोला पार्ट टाइम जॉब करो आप लोग। और मेरे दोनों बच्चे विद द ग्रेस ऑफ गॉड इतने स्ट्रांग बड़े हुए कि माय सन, मेरे बेटे ने इतना जबरदस्त अपने आप सब कुछ किया, अपने आप अपनी लाइफ बनाई, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। एक दिन अचानक वो ग्रेजुएशन होने के बाद बॉम्बे चला गया कि मैं कुछ करता हूँ। और वहां विद इन अ वीक ही गॉट ए जॉब इन दिस एडवर्टाइजमेंट। एंड प्लस वहां से उसने शुरू किया, कंप्यूटर सीखा, हाउ टू मेक पिक्चर, हाउ टू डू द फिल्म्स। मॉडलिंग भी की उधर, ही इज वेरी हैंडसम। और तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बेटी अपने बहुत अच्छी तरह ग्रेजुएशन हो गई। और ये प्रभु की बहुत ज्यादा कृपा थी कि बहुत अच्छा लड़का मेरे को मेरे बेटे का फ्रेंड था। बिकॉज तो उसने आगे होके डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो अपने उसको किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा करके मैंने उसको अपने घर भेजा और इसने अपनी लाइफ शुरू की। उसके बाद बॉम्बे में मेरे बेटे की शादी हुई तो उसको चार्टर अकाउंटेंट के साथ, वहां उसने बोला मम्मी अगर आप आओ तो ही हम, जब मेरी डॉटर प्रेग्नेंट हुई तो बोला कि मम्मी अब आप आ जाओ इधर बॉम्बे में, नहीं तो हु विल लुक आफ्टर द चाइल्ड। तो उनके पास गई। अभी वो जिस बच्ची की बात कर रही हूँ वो अभी 18 साल की हो गई है। इस साल उसने 12th किया। नाउ शी इज गोइंग अब्रॉड फॉर द स्टडी। तो उसको मैंने बड़ा किया क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ जॉब करती थी। अभी उसके बाद अभी 2-3 साल पहले आई रियलाइज के ऐसा दे आर नॉट फीलिंग, माय डॉटर इन लॉ इज नॉट फीलिंग इंडिपेंडेंट एज आई एम देयर। तो मेरा पूना में घर था। मेरे फादर इन लॉ ने एक बहुत अच्छा फ्लैट मेरे को पूना में दिया ओन में। तो वो फ्लैट इज विद मी। वो फर्निश छोड़ के ही मैं बॉम्बे गई थी। तो आई केम बैक 3 years बैक। एंड पहले मैं थोड़ा बहुत उदास हुआ, बट लेकिन उसके बाद अब आई एम वेरी हैप्पी, अपनी जिंदगी जीती हूँ। माय हस्बैंड इज देयर। गाने गाती हूँ, गाना मेरा पैशन है। और लाइफ में बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तब से गाती हूँ, क्योंकि माय फादर यूज्ड टू टेल कि घर से गुनगुनाने की आवाज आ रही है मतलब किरण घर में है, नहीं आ रही मतलब शी इज नॉट एट होम। तो वो गाना तब तो सारी जिंदगी की स्ट्रगल में छूट गया।
तो अभी उसके बाद उसको पकड़ा। अभी मैंने काफी सारी पंजाबी एसोसिएशन में स्टेज को शीट दिए। बॉम्बे में मैंने लॉयन क्लब ज्वाइन किया, वहां बहुत बड़े प्रोग्राम्स दिए। क्या बात है। अभी स्टेज में मेरी उतनी बड़ी बुलंद आवाज नहीं है, पर स्टिल आई सिंग। चलो दो दो मेरे में ये है, मैं जब बैठती हूँ गा के खुश हो जाती हूँ। स्टार मेकर में भी गाती हूँ। बस अभी आप तो दो लाइन आपने मेरे सुनाइए, गाना तो सुना ही होगा। 2 लाइन सुनाइए आप हमको, अच्छा सुनाऊं? 2 लाइन। आज ही मैंने एक रिकॉर्ड किया है, तो उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। जी जी। निर्बल का बल लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकार। वो इंसान बनो, बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। थैंक इस यू जी। बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां है तो पल भर का है मातम, किस नींद में हो किस नींद में हो जागो जरा सोच लो अंजाम। हम इंसान बनो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सरस्वती जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर थॉट्स? सरस्वती सरस्वती 2 बार है गुरु पूर्णिमा के दिन। Okay, probably she's moved out of the camera. So can we now check Usha Jacob? She is around. So can we have Usha share her thoughts on happy and sad moments of her life? Unmute, and if you can come on screen, switch on your camera. It will be nice to hear you. Usha ji? No? One more thing, joining you people is a very, 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 very good experience. We are very happy and we feel very happy that we have people around. We are not alone. Yeah, of course, of course. That is so true and so enriching to learn from all of you. So, Saraswati ji, I think Usha vanished. So, Prakash ji, namaskar, सत श्री अकाल. आप दुकान में हो, I know that. यस सर, मैं शॉप में हूँ और कभी कभी डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए मैं बंद कर रहा था। I know. हाँ सर। आपको तो हम मिले भी हैं, तो आप पता भी है। हाँ सर, पर वो बहुत कम टाइम मिला आपके साथ हमें। Sir, I'm very happy. I'm very happy from the beginning only. I had been the only child to my parents, और किसी बात की कोई रोक टोक नहीं थी. Being my father very religious fellow, he also drew me towards the Gurbani and Seva and all. We have Guru Granth Sahib at our home. तो सुबह आज भी मेरी 75 साल की उम्र में भी मुझे चाय और नाश्ता नहीं मिलता है जब तक गुरु की सेवा नहीं की जाती है या दर्शन नहीं किए जाते हैं. और उसकी बहुत मेहर रही. और सबसे हैप्पी मोमेंट मेरे थे मेरे शादी के. I got my lovely charm. कल मैंने 51st एनिवर्सरी मनाई है. एंड बच्चों ने सब किया था. It was my choice. बहुत तकलीफ थी, बहुत ये था कि शायद ध्यान नहीं होनी है या क्या, लेकिन मेरी भी जिद थी कि करनी है तो मुझे यही शादी करनी है. फिर बहुत अच्छे बच्चे मिले. My daughter is at Delhi.
very just like me only, always in forefront to help anyone. किसी का काम कर रहे हैं तो दर्शन कौर को याद करो दिल्ली में जाके. वैसे ही मेरा सन आपने कभी कभी देखा होगा दुकान, आप मिले भी हो, सॉरी, he met you also. He's also very nice. Then both the grandchildren, they are also fantastic. नेशनल चैंपियंस एंड राइफल शूटिंग में है. महाराष्ट्र का झंडा ही मेरी पोती लेके चलती है. शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. माय ग्रैंडसन इज टू गुड. इसके बाद क्या चाहिए? भगवान की दुआ से 75 साल इतने अच्छे गुजरे हैं, आगे भी गुजर जाएंगे. तो नो रिग्रेट्स एट ऑल, नो रिग्रेट्स एट. और जब भी कोई सोशल वर्क वगैरह या क्या होता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ. थोड़ा आज भी मेरे घर के लोगों को भी नहीं पता होगा, मैं वो सब कर लेता हूँ. कुछ गाने की और बताने की मुझे जरूरत नहीं है. अच्छी बात भी नहीं लगती है. we had adopted, I remember, bad time I remember was 84 riots at Delhi. Oh yeah. And that time I was at Delhi only, stuck up over there. और वहाँ मैंने ऐसे घर और ये जलते हुए देखे थे. लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो आई केम इन टच विद स्पर्श संस्था, NGO थी. उन्होंने मुझे बताया मीटिंग्स उन्होंने मुझे बताया कि सोशल क्या करना है. तो देन वी हैड अडॉप्टेड अबाउट 30 विडोज फैमिलीज फ्रॉम दिल्ली. उनको हम हर महीने यहाँ से अपने ग्रुप में से कलेक्शन वगैरह करके बेचते थे. 200 बच्चे हम लोग ने अडॉप्ट किए थे जिनको हर साल का हम लोग ये बेचते थे. मैं जब वहां से होके आया था तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ था कि जब when I went to that colony where they had given to their widows and all, एक कबूतर खाने के जैसा एक रूम दिया हुआ था. पर that was very bad. पर I remember then after all 3-4-5 साल के बाद उन्होंने ही हमको जब मैसेज भेजा कि नाउ प्रकाश सिंह जी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सबको हमने काम पे लगा दिया. आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज सो रिलैक्स. अब उनको मदद की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट. सबको हम लोग ने ये किया. दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड टोटली. पर दैट वो भी निकल गया, भगवान की दया से निकल गया. एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी. दैट वाज द बिंगरन वाला जनरल सिंह. नहीं, आप किसको नाम नहीं दे सकते. दैट वाज जस्ट पॉलिटिकल वन थिंग. आप भिंडरावाला की बात करेंगे तो हम इंदिरा गांधी की बात करेंगे. सो वी डोंट हैव टू टेक नेम्स. दैट वाज अ बैड टाइम फॉर. और उसके बाद भी मुझे पता है कि उस टाइम पे ही किसी ने कहा था कि ये टाइम आप भूल जाओगे. टाइम आएगा जब सिखों की जो होंद है ना वो सबको पता पड़ेगी. और आज टचवुड हर बात पे जब भी कहाँ पे कोई क्लेमिटीज होती है या क्या, तो माय सिख ब्रदर्स आर ऑलवेज देयर इन फोरफ्रंट ओनली. Why not? बहुत अच्छे. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You always got some pearls of wisdom for us. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Usha ji, you're back. Oh, you're outside in a supermarket. Okay, thank you so much. You can't speak, I can understand. One last chance, Saraswati ji. Are you around? चलिए ठीक है. I think looks like she is not around, or maybe some technical hitch. So we should respect that. And okay, so if anyone has anything more to say, go ahead. Otherwise, we can close this meeting today. And let me thank everyone for being here and encouraging us to continue this. It's a good opportunity for us to meet and exchange thoughts. So thank you very much, today, and Co. You are doing. Your destination is on the right. So I request. Yeah, thank you so much, and let's close the meeting in that case. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, everyone. Thanks a lot, everyone. Thank you.